Hello guys and welcome back to my channel. Now I am meeting you over after a long time and I hope आप सब बहुत अच्छे हैं. And now without wasting any time, let us start with a new topic which is for class 11th this time. And the new topic that we're starting is the chapter gravitation. So let's start. Okay. So we know that gravitation is a type of force, right? We have four types of universal forces, and we have the first force is the gravitational force. Then we have nuclear forces. Now, the nuclear forces are of two types, the strong nuclear force and the weak nuclear force. And the fourth force or the last force which we have is electromagnetic force. So these are our four fundamental forces. The strongest is the strong nuclear force, and out of all these, the weakest force is the gravitational force. Now let's understand what is this gravitation. So this gravitation is that when I have a particle and this particle has some mass, then this particle will exert some force on all the other particles which have mass. So gravitation is a force of attraction. We have to remember that gravitation is always attractive in nature. You will never say that gravitational force is repelling a body, right? So gravitation force is always attractive in nature. And what does it attract? What is the property which is exerting this gravitation force? So for any object to exert gravitation force on another object, the property that is important, the property that is necessary for that object to have is the mass. अगर एक पार्टिकल के पास मास होगा तभी वो एक दूसरे पार्टिकल पर ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट कर सकता है. द कंडीशन इज कि दूसरे पार्टिकल के पास भी मास होना चाहिए, राइट? नाउ यू विल आस्क, अब मैम हमने तो जितने भी पार्टिकल्स पढ़े हैं सबके पास कुछ ना कुछ मास होता है, हमने तो ऐसा कोई पार्टिकल पढ़ा ही नहीं है जिसके पास मास नहीं है. दैट इज रॉन्ग. देयर आर पार्टिकल्स व्हिच आर massless and one of the most famous examples in front of us is a photon. Photon is a massless particle, right? We all know that. So now let's, without wasting any time, let us understand that this gravitation is a type of force. It is a type of attractive force जो एक पार्टिकल जिसके पास मास है वो दूसरे पार्टिकल पे लगा रहा है जिसके पास भी मास. ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टिकल जिसके पास मास नहीं है उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करे. ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स के एक्ट करने की पहली कंडीशन ही ये है कि जो दोनों पार्टिकल्स हैं उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास मास होना चाहिए. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, द ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. तो यानी कि ये जो फर्स्ट मास है वो सेकेंड मास को अपनी तरफ पुल कर रहा है विथ सम फोर्स, एंड द सेकेंड मास इज ऑल्सो exerting the same force on the first mass. दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. ठीक है, so I can write that the force applied by 1 on 2 is equal to in magnitude of the force applied by 2 on 1, and since the direction of the two forces are opposite, मैं यहाँ पे क्या साइन लगाऊंगी, I will put a negative sign over here. Clear? Simple. Now this was your gravitation, but बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, they confuse the word gravitation with gravity. Now what is the difference between gravitation and gravity? Now, gravitation is a universal word. How is that a universal word? Because every particle which has mass exerts force, in which I am talking about gravitational force, on every other particle. Okay? हर पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट करता है.
जब हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के फोर्स को पढ़ते हैं, उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं. But when I am talking about gravity, I am specifically talking about Earth. एक ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही, ठीक है. सो दिस इज ग्रेविटी. एक अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रही है. ऑब्वियसली बात है, अर्थ का मास होगा कुछ, मास ऑफ अर्थ, लेट मी कॉल दिस कैपिटल एम ई. इस ऑब्जेक्ट के पास भी कुछ मास है जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, एम. तो जो अर्थ है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रही होगी. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ उसके ऊपर रखे हुए सारे ऑब्जेक्ट्स या उसके आसपास स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट करती है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटी. सो द डिफरेंस ओनली इज, अगर मैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर राम और श्याम दो पर्सन्स को ले लूं और ये एक दूसरे पर जितना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे इट इज ग्रेविटेशन. लेकिन अर्थ, अगर यहां पर श्याम खड़ा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है अर्थ, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी. तो जब भी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ पढ़ते हैं, वी टेक द वर्ड ग्रेविटी, वी यूज द वर्ड ग्रेविटी. जब भी हम लोग दो रैंडम ऑब्जेक्ट्स के बीच के फोर्स की बात कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन. क्लियर? यहां तक सब कुछ क्लियर है, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज, हाउ डू वी कैलकुलेट. अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ग्रेविटेशन को, ठीक है. सो फॉर दैट Newton gave us a law which is famously called Newton's law of gravity. अब ये Newton's law of gravity क्या है? So now we are doing Newton's law of gravity. Newton's law of gravity is, if I have a mass m1 and some r distance away from this mass another mass m2 is kept, then I can calculate how much force this m1 mass is exerting on m2 mass. We all know the force will be pulling, right? It will be attractive in nature. So force, direction of force will be like this. I am calling this capital F. Newton's law of gravity said, I am not writing it in words, you all can write in words. It said, the force exerted by one mass on the other mass is directly proportional to the product of the two masses, that is m1 and m2, and it is inversely proportional to the square of the distance between them. उसने बोला जो दो पार्टिकल्स हैं जिसके बीच में जो एक मास दूसरे मास पे फोर्स लगा रहा है वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, दोनों मासेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, देन व्हाट डिड वी डू? आई नो दैट आई कैन club these two equations into one, and that will be F is directly proportional to m1 into m2 divided by r square, right? And if I have to remove this proportionality sign, I would have to insert a proportionality constant, and this proportionality constant is capital G. ये proportionality constant क्या है हमारा? It is capital G. Now what is this capital G? This capital G is famously known as universal gravitational constant. Okay, this capital G is famously known as universal gravitational constant, and the value of this capital G is, so this G will have the value
in SI units, 6.67 into 10 raised to power minus 11. And right now I'm just writing this as SI unit because we'll be calculating what should be the unit of this capital G. Okay. Now, okay, so let's start. Now I know if I have M1 mass over here, I have M2 mass over here, and the distance between the centers of these two masses is small r, then I know this mass is being attracted by M2, the M2 mass is being attracted by M1. I am calling the magnitude of these forces as capital F, and this capital F is capital G times M1 into M2 divided by R square. And this is the Newton's law of gravitation. Okay. Now, then we did the capital G. Okay. So now what is this capital G? So this capital G is defined as, I can write capital G as F R square divided by M1 into M2, right? I can write this capital G is F R square divided by M1 into M2. Then what can we do? I have to find what is the SI unit of this capital G, okay? So to find the complete value, I need the SI unit, right? So what will be the SI unit of this universal gravitational constant? It will be, I know what is the unit of force, it is Newton. What is the unit of distance? The SI unit is meter square. And the SI unit of mass is kg. So you have kg and then you have another mass. You have product of two masses. So that is kg into kg. So that becomes Newton meter square per kg square. So this is the SI unit of your capital G. That means the value of capital G now is 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. So this is the complete value of the capital G. Okay. Now, we can also calculate the value in the CGS unit, right? When I have to calculate the value in the CGS unit. Now, what do I mean by CGS unit? CGS unit means when we have the units of length as centimeters, the unit of weight, or you can call mass, sorry, the unit of mass as grams, and the unit of time as seconds. Then the value will come out. You can do this activity. The value will come out 6.67 into 10 raised to power minus 8 dyne centimeter square per gram square. Okay. So this will be your value. Now, what do we have to do? Now, let us see what are the dimensions of this capital G. Now, we are dealing with a few things which can come in your exam as MCQ questions. What is the dimensions of capital G? So, you might have also done, आपने ये उसमें भी करा होगा units and dimensions chapter में, what are the dimensions of capital G? So, let's do this dimensions of capital G again. Now, how do we calculate the dimensions? For calculating the dimensions, I will use again this expression FR square divided by M1 into M2. And I know what are the dimensions of force. It is M raised to power 1, L raised to power 1, T raised to power minus 2. Then you have distance square. Distance is a length. So you have length square divided by, you have two masses. So you have M square. So let's simplify this. You will get M raised to power minus 1, L cube, T raised to power minus 2. So these are your dimensions of capital G, which is again a very important concept. Okay. So we have done, what have we done? We have learned how to find the gravitational force. We'll find it using this expression. Then we found what is the value of capital G. This is what I have to learn. And then I have to
understand how should we calculate the dimensions of capital G. If you know this expression, you will be able to find the dimensions very easily, okay? And this expression is very important. You have to, you will be using this expression a lot when you are practicing the questions of this chapter. So ultimately, it will get in your head. ठीक है, आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. Now, many students, what they do, they get confused. Confused between what? They get confused between capital G and small g. Right? What is the difference between capital G and small g? And the difference is very big. Okay? And I have seen many students being confused in the value of both of these. Okay? So the value for capital G, we have just done. Capital G is universal gravitational constant. And the small g is acceleration due to gravity. Okay? Capital G is universal gravitational constant and small g is acceleration due to gravity. So we have done what is a universal gravitational constant. It is the constant which comes when we are calculating the force between two masses kept at a smaller distance away, kept at smaller distance from each other. Now, what is acceleration due to gravity? अब acceleration due to gravity क्या होती है? Acceleration due to gravity में actually comes the role of Earth. Now, what happens? We see what is the acceleration of a freely falling body on Earth. Okay, so what do? We have Earth. You go on a tall building or a short building, doesn't matter, okay? And you drop something, right? You drop and this ball will come down. Anything, this object will come down, right? And we all know that when it will come down, the ball will increase its speed. For example, initially you just dropped the ball, so the initial velocity was 0. But when it will drop with quite high velocity, right? उसकी speed बढ़ जाएगी. Obviously बात है, अगर आप किसी चीज को नीचे फेंकते हो, आपने यहाँ पे just छोड़ा, यहाँ पे उसकी speed कम है, शायद 0 है, ठीक है? धीरे धीरे क्या होगा? वो obviously बात है, जब वो नीचे गिर रही होगी तो उसकी speed क्या होगी? Increase होगी, right? Obviously बात है. अगर कोई एक मंजिल की बिल्डिंग से नीचे कूदेगा तो वो कम वेलोसिटी से नीचे पहुंचेगा. अगर कोई 25 मंजिल की बिल्डिंग से नीचे कूदेगा तो वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से नीचे गिरेगा. आई डोंट, मतलब, ठीक है, डोंट डू दिस एट ऑल. यस, ओके. सो यू हैव, आई थिंक आई वुड हैव टू कट दिस bad joke from this video. Do not do that ever. Okay, so you have u is equal to, you can try it with a ball. Obviously बात है, एक बॉल के साथ कर सकते हो आप एक चीज. तो अगर आप एक बॉल को एक मंजिल से फेंकोगे तो वो कम स्पीड से नीचे आएगी. अगर आप उसको 25 मंजिल से फेंकोगे तो वो बहुत ज्यादा स्पीड से नीचे गिरेगी. ठीक है, आप कैच करने की कोशिश करना, आप देखोगे कि आपके हाथ पे बहुत ज्यादा तेज लगेगी अगर आप बहुत हाइट से बॉल को कैच कर रहे हो नीचे से. अगर आप कम हाइट से कर रहे हो तो आपको इतनी तेज चोट नहीं लगेगी क्योंकि उसकी स्पीड क्या है? कम है. तो बॉल इज एक्सेलरेटिंग, राइट? कोई भी चीज को अगर आप फेंकोगे तो वो एक्सेलरेट करेगा. एक्सेलरेट क्यों करेगा? क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसके ऊपर ग्रेविटी का असर है. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ जो बॉडी पे एक्सर्ट करेगा, उसकी वजह से जो उस बॉडी को एक्सेलरेशन मिलेगी, that acceleration is called the acceleration due to gravity. The difference is this universal gravitational constant comes in the expression of the force. When you are calculating the force between any two masses, the acceleration due to gravity is acceleration, right? वो एक acceleration है. और ये acceleration क्या है? ये acceleration है जब आपने एक body को नीचे फेंका
तो अर्थ जब उसको अट्रैक्ट कर रही है, उसकी वजह से जो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, वो एक्सेलरेशन कितनी होगी? जब हमने उसको कैलकुलेट करा, द एक्सेलरेशन केम आउट 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ। ओके, एंड इसीलिए इसको हमने क्या बोला? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज अर्थ की ग्रेविटेशन पुल की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन एक बॉडी को मिली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, that is 9.81 meter per second square. Now the beautiful thing is that this capital G is also a constant and this small g is also a constant on the surface of earth. ठीक है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं because they do not know what is the difference between capital G and small g, and the difference is very simple. Capital G is the universal gravitational constant and small g is the acceleration. Small g एक acceleration है जो कि एक ऑब्जेक्ट को मिल रहा है when it is freely falling on the surface of the earth. Okay, now let's move ahead. And now what do we have to do? The next thing that we have to do is, okay, so the next thing that we have to do is, okay, so let's quickly move to principle of superposition of gravitational forces. And this is very simple. This is very simple. अगर आपको vectors आता है तो बहुत सिंपल है. It just says that एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, यहाँ पे एक मास रखा है m1, यहाँ पे एक मास रखा है m2, यहाँ रखा है m3, यहाँ रखा है m4, यहाँ रखा है m5, ऐसे कर करके भी आप बहुत सारे मासेस, और यहाँ पे रखा है mn. ओके, ऑल दी मासेस, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? m1 और m के बीच का डिस्टेंस है r1, m2 और m के बीच का डिस्टेंस है r2, m3 mn rn, ऐसे कर करके we have the distances between them r3 r4 r5. ठीक है, नाउ हमें पता है कि जो फोर्सेस होंगे that will be attractive in nature, तो ये m1 मास इस m को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा? इट विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस. जो लाइन दो मासेस को जॉइन कर रही है उसके अलोंग फोर्स होगा, है ना? लेट मी कॉल दिस फोर्स F1 and this force is a vector quantity. I call this force F2. I call this force as F3. I call this force as F4. This force as F5 and this force as Fn. Okay, then we say the principle of superposition says the total force, or you can say the net force. Okay, the total force or the net force on mass small m. हम लोग स्मॉल m पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, इसीलिए हमने सारे फोर्सेस को कहाँ पे ड्रॉ करा है? m पे ड्रॉ करा है. ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें फोर्सेस ड्रॉ किस ऑब्जेक्ट के ऊपर करने हैं. अरे भाई, जिस मास के ऊपर आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो उसी के ऊपर तो सारे फोर्सेस को ड्रॉ करोगे, राइट? सो इसीलिए हमने क्या करा है? हमने सारे फोर्सेस को ड्रॉ करा है ऑन द मास स्मॉल m. सबकी डायरेक्शन जो है फोर्स की वो हम लोगों को कहाँ पे देखनी है? जहां पे आपको टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है उसी के ऊपर तो ड्रॉ करना पड़ेगा. सो इसीलिए हमने सारे फोर्सेस को कहाँ ड्रॉ करा है? स्मॉल m पे ड्रॉ करा है. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हमने इस वाले मास पे क्यों नहीं करा, इस वाले मास पे क्यों नहीं करा? अरे जिसके ऊपर निकालना चाहते हो उसी के ऊपर तो ड्रॉ करेंगे, बाकी जगह पे ड्रॉ करके क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, तो this will be given as the sum of
all the forces from 1 to n. And this sum is a vector sum because you are calculating the net force. क्योंकि आप net force calculate कर रहे हो, आपको क्या calculate करना पड़ेगा? आपको vector sum लेना पड़ेगा सारे के सारे forces का. तो इसीलिए जो net force है on mass small m, that is F1 plus F2 till F सारे फोर्सेस का you have to take the vector sum. कैसा सम लेना है आपको? वेक्टर सम लेना है. Now what I can do? I can write the net force as, अब मैं सारे फोर्स को क्या लिख सकती हूँ? I can write F1 vector as G M1 M, the product of two masses. M1 और M के बीच का फोर्स लिख रही हूं मैं F1, तो M1 into M divided by distance between them which is R1 square. और इसकी डायरेक्शन क्या लिख सकती हूँ मैं? इसकी डायरेक्शन में लिख सकती हूँ R1 cap, that is the unit vector along this R1 direction. ये जो R1 है इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं क्या बोल रही हूँ? R1 cap. ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? अब देखो ऐसे कर करके मैं सारे फोर्सेस को लिख पाऊंगी. अगर मुझे F2 लिखना पड़ा तो मैं कैसे लिखूंगी? G M2 M डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर R2 कैप. ठीक है, तो हमने क्या करा? हमने M1 की जगह क्या लिखा? M2. R1 की जगह क्या लिखा? R2. और R1 कैप की जगह क्या लिखा? R2 कैप. तो जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, M1, M2, M3, M4, मेरा क्या क्या चेंज हो रहा है? एक तो ये वाला मास चेंज हो रहा है, ये R चेंज हो रहा है और ये वाला R चेंज हो रहा है. तो मैं नेट फोर्स लिख सकती हूँ G तो हर में कांस्टेंट होगा, G तो सब टर्म्स में कॉमन आएगा, स्मॉल m भी हर टर्म्स में कॉमन आएगा. तो GM तो मैं ले लेती हूँ कॉमन. अब अंदर क्या बचेगा? अंदर बच जाएगा M1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस M2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप. एंड ऐसे कर करके लास्ट टर्म क्या होगी? MN RN कैप डिवाइडेड बाय RN स्क्वायर. ठीक है, अब इसी टर्म को आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ समेशन. तो नेट फोर्स क्या था हमारे पास? GM ब्रैकेट में M1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, यही था. M2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, MN RN कैप डिवाइडेड बाय RN स्क्वायर. तो इसको हम समेशन में लिख सकते हैं GM I is equal to 1 to N MI, because I is going from 1 to N. तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? 1 चेंज, 2 चेंज, ऐसे कर करके N तक आ रहा है. तो MI डिवाइडेड बाय RI स्क्वायर RI कैप. And this is the net force. और यहाँ पे ये नेट फोर्स हमें कैसे पता वेक्टर सम है? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो ये यूनिट वेक्टर बैठा है, ये यूनिट वेक्टर सारे के सारे फोर्सेस की डायरेक्शंस के साथ डील कर रहा है. ठीक है, अब द थिंग इज ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये चीज याद कर ली है कि फोर्सेस होते हैं वेक्टर, और जब भी रिजल्टेंट फोर्स लगाना है तो हमें फोर्सेस का क्या सम लेना है? वेक्टर सम. तो हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि हमें जब सम लेना है, वेक्टर सम लेना है, तो ये याद रख के कोई फायदा नहीं होगा. क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? हम इंडिविजुअल फोर्सेस की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसको जिस तरीके से हमने वेक्टर्स को सॉल्व करना सीखा है, उनका रिजल्टेंट निकालना सीखा है, उसी को यूज करके क्या करेंगे? रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू निकाल.
ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आया हो। नाउ आफ्टर दिस वी हैव अ फ्यू न्यूमेरिकल्स प्लान फॉर यू। मेरे पास आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। उन न्यूमेरिकल्स को नाउ विल प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स। हम लोग उन न्यूमेरिकल्स को करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, क्या हम इस कॉन्सेप्ट को आगे क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, यू हैड फन, यू एंजॉयड लर्निंग दिस टॉपिक, सो डू गिव मी लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसा लगा, कितने टाइम बाद मिलके। एंड थैंक यू so much for watching and I'll see you all in the next video.